Hello students and welcome to English Tutorials Macvision Abhiraj Girls School. Today we will discuss the question answers of the chapter The Portrait of a Lady. Question number 1. Mention the three phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. So here you have to mention three phases of author's relationship with his grandmother. ऑथर और उनकी ग्रैंडमदर की रिलेशनशिप के थ्री फेजेस डिस्क्राइब करने हैं बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड. जब वो कंट्री को छोड़ के अब्रॉड गए थे, फॉरेन गए थे टू स्टडी इन द यूनिवर्सिटी, उससे पहले के थ्री फेजेस उनकी लाइफ के, उनकी रिलेशनशिप के अपनी ग्रैंडमदर के साथ डिस्क्राइब करने हैं इस क्वेश्चन में. The first phase of author's relationship with his grandmother is the author's childhood when they lived together in the village. So the first phase is author's childhood. Author का childhood when he used to live with his grandmother in the village. So author के जो parents हैं, they went to the city, वो city में shift हो गए थे and author and his grandmother used to live in the village. And they lived together. They were very good friends. His parents left him with her when they went to live in the city. She used to wake him up in the morning, get him ready for school, and after breakfast accompanied him to school. She spent her time in the temple that was beside the school, and they would walk back together. ग्रैंडमदर ऑथर को सुबह सुबह उठाती थी, उनको रेडी करती थी स्कूल के लिए और ब्रेकफास्ट देती थी. एंड आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट शी अकम्पनीड हिम टू स्कूल. उनके साथ स्कूल भी जाती थी. एंड देयर वाज अ टेम्पल बिसाइड द स्कूल. स्कूल के साइड में एक टेम्पल था. सो ग्रैंडमदर यूज्ड टू सिट देयर इन द टेम्पल एंड अकम्पनीड हिम बैक होम. सो दे वुड वॉक बैक टुगेदर होम. वो वापस जब आते थे तो साथ में घर आते थे. The second phase of their relationship began when they went to the city. अब second phase कब आता है? जब वो लोग city में shift हो जाते हैं, village से city चले जाते हैं. That was a turning point in their friendship. So this was a changing point in their friendship. एक turning point था उनकी friendship में. A change came about. He used to go to an English school in motor bus. After that, after shifting to the city, author used to go to English school in a motor bus. वो मोटर बस में इंग्लिश स्कूल जाते थे एंड हिज ग्रैंडमदर कुड नो मोर गो टू स्कूल विद हिम. उनकी ग्रैंडमदर उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी. एंड शी डिड नॉट इवन लाइक द इंग्लिश स्कूल्स एज देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स. गॉड की, स्क्रिप्चर्स की, भगवान की, रिलीजियस कोई भी टीचिंग्स नहीं दी जाती थी स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में. सो शी डिड नॉट लाइक दोज स्कूल्स. She hated Western science and music, and she also did not like Western science and music. The third phase of their relationship started when with the authors going to university. So अब third phase कब start हुआ उनके relationship का? When the author went to the university. He was given a room of his own. उनको खुद का एक room दे दिया गया था. So the common link of their friendship was snapped. उनकी फ्रेंडशिप का एक कॉमन लिंक क्या था? उनका रूम. और अब वो भी नहीं रहा था. His grandmother accepted her seclusion with resignation. So grandmother ने चुपचाप ये चीज accept कर ली. She did not fight about this. She did not give a thought about it. Okay. 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to city school. When the author started going to city school, what were the 3 reasons that disturbed author's grandmother? Okay, so the 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to city school were: number 1, author told her English words and Western science which she did not understand, nor could she help him in his studies.
सो ऑथर उनको इंग्लिश वर्ड्स, वेस्टर्न साइंस की चीजें बताते थे, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आता था और वो ऑथर की हेल्प भी नहीं कर पाती थी इन स्टडीज, इन हिज स्टडीज. No teaching about God and scriptures in school. Second was that no teaching was given to them about God and scriptures. भगवान के बारे में, गॉड के बारे में कुछ भी टीचिंग्स उनको नहीं दी जाती थी, कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था, कुछ भी नहीं सिखाया जाता था. Music lessons given to the author in school which she considered were not meant for gentlefolks. So she considered music to be not to be taught to the gentlefolks, not to be meant for gentlefolks. वो सोचती थी कि जो अच्छे लोग होते हैं सोसाइटी में, जो सोफेस्टिकेटेड लोग होते हैं सोसाइटी में, उनके लिए नहीं होते म्यूजिक के लेसन्स, उनके लिए नहीं होता म्यूजिक. म्यूजिक इज जस्ट फॉर द outcast people, for the people who are of the lower caste, okay, the beggars. Three ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up. जब ऑथर बड़े हो गए थे तो उनकी ग्रैंड मदर कैसे टाइम स्पेंड करती थी when they came to the city. उसके बाद the bond of relationship between the narrator and his grandmother started becoming weak. So the bond of relationship जो कि नरेटर और उनकी ग्रैंड मदर के बीच में था वो बहुत कमजोर होता गया, बहुत वीक होता गया. Grandmother accepted her seclusion with resignation and found out new ways of spending her time. So उन्होंने नए नए तरीके निकाले to spend her time. किसने? ग्रैंडमदर ने. What were those? वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करती थी? She now spent her time at the spinning wheel from morning till evening. So सुबह से शाम तक वो स्पिनिंग व्हील पे अपना टाइम स्पेंड करती थी. Number 2, she continued reciting prayers and rarely talked to anyone. और वो क्या करती थी? She used to recite prayers. वो प्रेयर्स बोलती थी और वो किसी से भी बात नहीं करती थी, बहुत कम बात करती थी. The third way in which the old lady spent the day was by feeding sparrows. So she used to feed sparrows in the afternoon. वो स्पैरोज को फीड करती थी, उनको दाना डालती थी. So these were the three ways in which grandmother used to spend her time when the author grew up. The odd ways in which the author's grandmother behaved just before she died. So क्या अजीब अजीब से तरीके से she was behaving before she died. Grandmother मरने से पहले, अपनी डेथ से पहले क्या अजीब अजीब चीजें कर रही थी. Before the grandmother died, a change came over her. So before her death, before grandmother's death, उनमें बहुत सारे changes आ गए थे. एक अजीब सा change आया था. She collected the women of neighborhood. उन्होंने आसपास की neighborhood की, पड़ोस की ladies को collect किया. Took a broken drum, एक फटा हुआ टूटा हुआ ड्रम लिया and sang of homecoming of warriors the whole day. और पूरे दिन वो क्या गाती रही? Homecoming of warriors. She did not pray that day. उस दिन उन्होंने प्रेयर भी नहीं की. She did not pray that day. The next morning she got a mild fever. Next morning उनको हल्का सा फीवर आ गया. She herself declared that her end was near and continued praying. So she herself said कि मेरा जो end है वो आ चुका है. I am about to die. And she continued praying. She did not want to waste her time talking to people. She lay peacefully in bed praying and telling beads. So she was lying peacefully in her bed and she was telling the beads. वो माला फेर रही थी. Her lips stopped moving. उनके lips एकदम से move करना बंद कर गए. The rosary fell from her fingers. जो रोजरी थी, जो माला थी, जो वो जप रही थी, वो उनकी fingers से नीचे गिर गई. Her face turned pale. She appeared to be very dull. और सबको समझ आ गया that she was no more. She has died. The ways in which the sparrows expressed their sorrow when the author's grandmother died. So sparrows ने कैसे express किया अपना दुख
when author's grandmother died. When the grandmother died, thousands of sparrows expressed their sorrow by sitting scattered in the veranda in mourning. So, grandmother की जब death हुई, thousands of sparrows came there. They sat in the veranda. Veranda में वो birds बैठ गई and they were very sad and they were mourning. वो शोक मना रही थी. They did not chirp. और वो बोल भी नहीं रही थी. They were not chirping. Author's mother threw some pieces of bread, but they did not eat them. Author की mother ने कुछ pieces of bread भी डाले, लेकिन उन्होंने नहीं खाए. When they carried grandmother's corpse, the sparrows flew away quietly. और जब वो grandmother की corpse को उठा के ले गए, sparrows flew away. वो चली गई वहां से और even उन्होंने bread भी नहीं खाई. So these were the ways in which the sparrows expressed their sorrow. Sparrows ने अपना sorrow, अपना दुख express किया. The author, talking about the text, the author's grandmother was a religious person. What are the different ways in which we come to know this? Author की grandmother एक religious person थी. She was very religious. हमें कैसे पता चलती है ये चीजें? क्या different ways हैं जिससे हमें ये चीज पता चलती है? Answer. The author's grandmother was a highly religious lady. Author की grandmother बहुत religious lady थी. Her hand was always busy in telling beads of rosary. She always used to tell the beads of rosary. वो हमेशा माला फेरती रहती थी. She used to get up in the morning and said her morning prayers. वो सुबह सुबह उठ जाती थी और अपनी morning prayers बोलती थी. In village, she accompanied the author to school and used to sit in the temple reading scriptures which was attached to the school. So village में वो author के साथ जाती थी उनके school तक, क्योंकि school के side में temple था और वो वहाँ बैठ के scriptures पढ़ती थी. She was unhappy because there was no teaching about God and scriptures at the city school. और उनको इस बात का बहुत दुख था कि भगवान की, गॉड की कोई भी टीचिंग्स नहीं दी जा रही थी सिटी स्कूल में. When she realized that her end was near, और जब उनको रियलाइज होता है कि उनका एंड नियर है, आने वाला है, she stopped talking, उन्होंने बोलना, बात करना बंद कर दिया and lay peacefully in the bed, praying and telling her beads till she took her last breath. So, जब तक उनका एंड आया, जब तक उनकी डेथ हुई, तब तक वो प्रेयर्स बोल रही थी एंड शी वाज टेलिंग हर बीड्स ऑफ रोजरी. वो अपनी माला फेर रही थी, भगवान के लिए माला फेर रही थी वो. Describe the changing relationship between the author and his grandmother. Did their feelings for each other change? So, ऑथर और उनकी ग्रैंडमदर के बीच में जो रिलेशनशिप था, चेंजिंग रिलेशनशिप, जो चेंज आ रहा था रिलेशनशिप में, उसको डिस्क्राइब करना है. The changing circumstances had a great impact on the relationship between the author and his grandmother. So, जो changing circumstances थे, जो condition change हो रही थी, जो situation change हो रही थी, उसकी वजह से उसका बहुत impact पड़ रहा था author and grandmother की relationship पे. Author and his grandmother lived as intimate friends in the village. So जब वो village में थे, they were very good friends. और turning point came in their relationship when they came to the city. और जब वो city में आए तो उनकी relationship में एक turning point आया, एक change आया. The author joined an English school and grandmother could not help him in studies. Author ने एक English school join कर लिया था और grandmother उनकी help नहीं कर पा रही थी पढ़ने में. She did not like the kind of education given to the author at English school, as there was no teaching of God and scriptures in city school. So English school में भगवान की कुछ भी पढ़ाई ही नहीं होती थी, God के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था, कोई prayers नहीं होती थी. So she did not like it. She spent her time spinning and feeding the sparrows. और वो अपना time spend करती थी किस चीज में? Spinning में, feeding the sparrows. When the narrator grew up, अब जब narrator और बड़े हो जाते हैं, वो यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, अब्रॉड चले जाते हैं, तो ग्रैंडमदर इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती हैं और इसके बारे में कुछ भी नहीं कहती, चुपचाप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है.
बट their फीलिंग्स फॉर ईच अदर डिड नॉट चेंज, लेकिन उनकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए चेंज नहीं होती है. इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस. जो उनकी रिलेशनशिप में चेंजेस आए थे वो सिर्फ सर्कमस्टांसेस की वजह से थे. वुड यू अग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर? क्या ऑथर की ग्रैंडमदर एक स्ट्रॉन्ग वुमन थी इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर? इफ यस, गिव इंस्टेंसेस टू शो दिस. अगर आपको लगता है शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग लेडी, शी वॉज स्ट्रॉन्ग इन हर कैरेक्टर, तो यू हैव टू गिव reasons also. So this question you have to answer because the answers might vary. क्योंकि हो सकता है आप अग्री करें इस चीज से, हो सकता है आप ना करें. So you have to write this answer on your own. Hope you have understood. Thank you so much, children.